Hi guys, मैं हूँ छवि मित्तल and welcome to Being Woman with छवि. So today I will talk about how I weaned off अरहम, यानी कि मैंने उसके solids कैसे start किए. So बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं मैसेजेस में और मुझे लगता है ये बहुत ही relevant सवाल है क्योंकि हर माँ confused होती है कि क्या दिया जाए, कब दिया जाए, कैसे दिया जाए, कितना दिया जाए. I was also very confused, but today I'm going to share my own experience with you. So the first question is, when is the right time? So according to the WHO guidelines, every baby should be exclusively breastfed for the first 6 months. And if not breastfed, at least formula देना चाहिए. Cow's milk या goat's milk या और कुछ भी solid नहीं देना चाहिए. लेकिन फिर भी बहुत सारे pediatricians ऐसा क्यों बोलते हैं कि 4 महीने पे solid start कर दो या 4.5 महीने पे और 5 months. Well, in Arham's case, I started his solids at 4.5 months and so is with Ariza. At 4.5 months, this little one was also on solids. Yes. So, iska, I think if I want to make the closest example would be closest analogy would be कि during the lockdown we are not supposed to go out, but if there is a medical emergency we can, if we want to buy essentials we can. So I think that is the whole theory behind it कि as a rule 6 months तक every baby should be exclusively on breast milk or formula milk. लेकिन कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जिनको सॉलिड जल्दी भी शुरू किए जा सकते हैं. सो आई थिंक इन दैट रिगार्ड जस्ट totally trust your pediatrician, and if he says that at 4.5 months or 5 months your baby is ready to be put on solids, then that is the right time. The next thing is कि क्या दिया जाए, what to start with. So there are some people who believe कि स्टार्च देना चाहिए जैसे कि राइस या आलू. Some people believe कि बनाना से शुरुआत करनी चाहिए. So I think again it depends on what your pediatrician is advising you to, because हर baby थोड़ा different हो सकता है, I believe. With Arham, we started him on rice water first, and with Ariza we started her on bananas first. So depending on what the doctor advises you, I think is the best way to start. But now I'm going to come to the final point, and that is how to introduce solids. तो सबसे पहली चीज जिसका मैंने ख्याल रखा when I started introducing solids for Arham was कि at a time एक ही चीज इंट्रोड्यूस करनी है. You know, so if I've introduced bananas और the first thing that I introduced was राइस का पानी, तो जब मैंने राइस का पानी इंट्रोड्यूस किया तो मैंने 7 से लेके 10 दिन तक सिर्फ राइस का पानी दिया उसे और कोई दूसरी चीज इंट्रोड्यूस नहीं की. So that I can completely understand how his body is reacting to that particular food. Is it causing him constipation? Is it giving him loosies? Is it giving him a stomach ache? How well is he being able to sleep on that meal? And a lot of other things. So one thing at a time. दूसरी चीज जिसका मैंने खास ख्याल रखा था कि एट अ टाइम उसे एक मील से वीन ऑफ करना है. सो व्हाट आई डिड वाज व्हेन आई इंट्रोड्यूस द राइस वाटर, आई इंट्रोड्यूस्ड इट एज द फर्स्ट मील ऑफ द डे. लेकिन पहले दिन मैंने उसे सिर्फ 1 चम्मच राइस वाटर दिया, टॉप्ड अप विद हिज रेगुलर ब्रेस्ट मिल्क. सेकेंड डे मैंने उसे 2 चम्मच राइस वाटर दिया, टॉप्ड अप विद द ब्रेस्ट मिल्क, सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल द टाइम द ब्रेस्ट मिल्क केप्ट रिड्यूसिंग एंड द राइस वाटर केप्ट इंक्रीजिंग. और जब उसकी एक मील फाइनली वीन ऑफ हुई उसके बाद मैंने सेकेंड मील स्टार्ट की. What is also important is कि जब भी कोई नया फूड इंट्रोड्यूस किया जाए वो हमेशा towards the morning किया जाए, क्योंकि just in case the food reacts to the baby, maybe he gets an allergy or any kind of reaction that the food may have, you have the whole day to deal with it. अगर कोई भी चीज़ रात को इंट्रोड्यूस की जाएगी और suppose बेबी ने उसे ठीक से डाइजेस्ट नहीं किया तो फिर we don't want to disturb the baby in the night. So once he was weaned off the first meal of the day, I just simply started giving him the rice water for the meal 2 and introduced the new solid food in meal 1 again. So I'll tell you what are the early foods that I introduced for Arham and Ariza both. Banana, mashed banana, steamed apple, steamed pear, mashed chiku, mashed papaya, rice का पानी, eventually mashed rice, दाल का पानी,
दाल राइस का पानी मिक्स करके, बॉइल्ड मैश्ड पोटैटो, स्वीट पोटैटो, and dahi, very important is dahi, mashed dudhi. So stuff like this is what I introduced for both my kids. एक बार जब अरहम प्रॉपरली सॉलिड्स खाने लगा तो मैंने धीरे धीरे करके ग्रेन्स भी इंट्रोड्यूस करने शुरू किए अदर देन राइस. आई स्टार्टेड गिविंग हिम नाचनी, आई स्टार्टेड गिविंग हिम सूजी, ओट्स, दलिया एंड यू नो थोड़ी थोड़ी रोटी ऑल्सो मैश करके. Something that a lot of people ask me and there's a lot of debate going on about it nowadays is कि बेबी को पहले 1 साल में चीनी और नमक देना चाहिए कि नहीं. So to be very honest, 7 years ago when Ariza was born, I didn't know much about it, and as per the doctor's advice, we had started salt for her but not sugar, little bit of salt. But now because WHO guidelines are very very clear on this matter कि शुगर और सॉल्ट दोनों ही बेबी के लिए पहले साल में बहुत ख़राब हैं और नुकसान दे सकते हैं, इसलिए आई डेंट स्टार्ट एनी सॉल्ट फॉर अरहम टिल अबाउट 9 months. और 9 months पे भी मैंने बिल्कुल लिटरली 2 grains ऑफ सॉल्ट करके धीरे धीरे उसका सॉल्ट शुरू किया, सो दैट बाय द टाइम ही इज़ 1 year old his body is used to consuming a little bit of sodium. And sugar is something that we still haven't started for Arham. He's already turned 1, but I don't see sugar as any kind of a health food, और मुझे नहीं लगता कि sugar देने से या नहीं देने से he's missing out on anything. So I think that can wait. And you know, as all kids, when they grow up, they definitely start eating a lot of sweet on their own, so I'm not worried about that. आई होप कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ हेल्प मिली होगी एंड आई वॉज एबल टू क्लियर एटलीस्ट सम ऑफ योर डाउट्स. आई जस्ट वॉन्ट टू लीव यू विथ वन स्मॉल टिप कि बेबी की लाइफ के पहले साल में जितनी वैरायटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कीजिए, बिकॉज दैट विल ओनली हेल्प योर चाइल्ड बिकम less fussy eater as he grows up. And on that note, I'll sign out. But guys, please do subscribe to Being Woman with Chavi. There's a lot that I want to share with you, and don't forget to click on the bell icon ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले. So this is me signing out. Love and peace from to you. Adam, say bye. Bye. Say bye to the camera. Say bye. Achchi, achchi, achchi करके say bye. Achha, say what? There's the snake.